100k is not enough. Yeah, not for It's me. like 8 lakhs a year, you're like, not enough. 4 लाख का मैंने 1.15 CR बनाया. Past 8 months में I earned about 50 lakhs on a portfolio of 1 crore. So that's a 55% return in the last 8 months itself. So I'm a crypto trader, Web 3.0 and a blockchain enthusiast. The problem with my generation is कि हमारे पास resources है, but हम उनको utilize नहीं करते. तो उस दिन मेरे दिमाग में आया ये कौन है जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर सर खड़े हैं और ये बैठे हुए हैं. And at the last point कुछ भी नहीं बचा था. So it felt like कि यार दुनिया बहुत पैसा करती है. Let's earn money only now. Hey guys, welcome back to another episode of the 1% Club Show, where we explore the financial journey of some of the most successful people in the country. On today's episode, we're doing something special. We're calling teenagers who have apparently become Crorepatis. So let's start off with you, Aru. Okay, sure. Let's understand, what are you currently doing? Basically, I'm studying at Master's Union. First year, it's my same got over. And if you ask me what I'm currently doing in finance, I'm trying to figure out how can I get into a hedge fund or a quantitative fund. And I'm preparing for my CFA. I'm trying to gain knowledge right now. Let's talk a little bit about your investment journey, because you said you are learning about finance. And what I've heard is that you seemingly converted, 1.5 lakhs into 1.4 crores or something. Is that right? Not 1.4 lakhs. It was a bigger amount. How much was it? It was almost around 90 lakhs and I took it to 1.7. 90 lakhs, you made it 1.7 crores. Yeah, 1.7, almost 1.8, 2x. Over what time period? Over a year. Over 1 year. In 1 year, you doubled from 90 lakhs to 1.8 Yes. crores. So walk us through this. How did you do it? Okay, so basically, yeah, the 90 lakhs wasn't mine. I asked my dad to give it to me. Oh shit, bro. Nice. Yeah, definitely. How old are you? I'm currently 20. उनका जो portfolio पड़ा हुआ था, I asked to manage it. So what I did, कि I allocated the funds. मैंने calculations करके कि थोड़ा मुझे mutual funds में डालना है, so that I get assured returns. Some of them I invested heavily in the index fund, which I made personally using the weighted average and researching about the Nifty 50 कि वो कैसे work करता है. And I used something called as derivatives. But right now you're working with the capital of 1 and 2 crores. Yes. Right? No, it's bigger now. It's bigger now. How much is it now? Can't say. Can't say. So now tell me, how did you become this finance nerd? Finance nerd. So I was in 9th class and COVID struck. So lockdown, I had nothing to do. I read an article. I was searching the highest paying jobs in the world. Okay. Yeah. And there was this article by Harvard Business School. Data science is the most sexiest job of 21st century. Okay. So I thought कि चलो ये करते हैं. Python सीखा. I know Python very well. I can do data analysis, data science. I can run machine learning algorithms also on it. I'm currently building more on that. So all of this you self-learned? Yeah, self-learn. Udemy, YouTube. YouTube is a great source. You can find anything. I think so. The problem with my generation is कि हमारे पास resources है, but हम उनको utilize नहीं करते. Studied Python by yourself through Udemy and YouTube, and then what happened? मुझे लगा कि I used to see your videos and अलग थोड़ा financial वाले कि $500,000 मिले per year, 10 साल बाद जाके how should I invest it? मैं कब जाके billionaire बनूंगा? एक टीनेजर के मन में रहता है कि they do want to buy a McLaren and they want a big house and they want a yacht in Monaco, they want to see F1 yacht पे जाके. तो मुझे ये सब चाहिए था and अभी भी चाहिए. I'm not saying. तो मैंने सोचा ऐसे तो नहीं होगा भाई. This is not good. At the starting of my 9th class, I lost my mom to cancer. Okay, sorry to hear that. So I was like, and the thing was कि we had money, ऐसा नहीं था, but it all drained in mom's operation and at the last point कुछ भी नहीं बचा था. So it felt like कि यार दुनिया बहुत पैसा करती है. Let's earn money only now. I couldn't save my mom, but if I can become rich and I have money and I can provide all these things to the society back, so मैं किसी और की माँ को बचा लूँ तो शायद मेरी माँ खुश हो जाए. So that's a thinking behind it. So that was like your driving motivation, Yeah. because you mentioned that people in our generation do not have that intrinsic motivation. Yeah, maybe. This sort of was your catalyst. Yeah. And I got to know this very late, maybe कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं. Intrinsic motivation आ कहाँ से है? These things, PS5, all these things, watches, shoes, Jordans, these don't work for long. These are not like a good source of motivation, I think so. They die. But I think so. This is one of the strongest reasons I still have, and that still keeps me awake at night. For sure.
कमिंग बैक टू द स्टोरी, डेटा साइंस बहुत अच्छे से किया, आई लर्न कोडिंग लैंग्वेजेस, टेक स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरा. देन मुझे लगा कि टेक में तो पैसा नहीं है, और बड़ा पैसा बनाना. पैसा नहीं है मतलब you're like 100K is not enough. Yeah, 100K not is so like 80 lakhs a year. You're like not enough. इतना नहीं, इतना छोटे पे सेटल नहीं होना. आई वांट टू बी द Billionaire. या बिग शॉट. पीपल कॉल वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट. वहाँ पे मुझे डेविल ऑफ द दलाल स्ट्रीट बनना. Devil of the Dalal Street. Okay. मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक मनी. मुझे एक चीज़ देखी कि एक बंदा है ऑन यूट्यूब, रिकी गुटेरेस, 21 years old. सुबह 9 बजे उठता है, goes into his room, clicks some buttons on his computer. 3 बजे शटर बंद, 3 भी नहीं एक्चुअली 12 बजे शटर बंद उसका, रूम लॉक्ड. Gets into his McLaren, go to and Starbucks, वहाँ से Starbucks लेता है, and then goes to real estate shopping and buys 3 properties on the same day and comes back home and sleeps well. So like this one reel you would have made. Yeah. So मुझे लगा कि कर क्या रहा है ये, 21 साल का है. What is he doing? फिर मैंने पूछा, पापा को दिखाया वो वीडियो इन कोविड कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, बटन क्लिक क्या कर रहा है, व्हाट आर दीस थिंग्स ऑन हिज कंप्यूटर. सो माय डैड सेड कि ये मत करना. That was trading. Yeah, that was trading. He was an intraday trader. उस वक्त डैड का बिजनेस भी चल नहीं रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. कोविड वाज देयर, एवरीथिंग इज लॉक्ड. तो आई सेड कि अगर मैंने इनको कन्विंस कर लिया तो फिर मैं इनके कंधे पे चढ़ के व्हाट एवर ही विल स्टडी, I'll get on his shoulder and I'll learn with him. और मैं अपना स्कूल का भी पढ़ता रहूँगा, मैं अपना टेक्निकल भी करता रहूँगा, जैसे कोडिंग, बिकॉज आई लव कोडिंग स्टिल. पापा को भी लगा कि ठीक है कुछ सेंस वाली बातें कर रहा है. सो माय डैड स्टार्टेड स्टडिंग अ लॉट. हम सुबह 9 बजे उठते थे, मार्केट्स पे बैठते थे 9 से 3, यूज्ड टू सी मार्केट्स. 3 बजे लंच करके वी यूज्ड टू सी ऑल द वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड ऑल द कोर्सेज वी बॉट स्टॉक मार्केट के ऊपर. हमें इतना भी नहीं पता था व्हाट इज अ स्टॉक. वी केम फ्रॉम व्हाट इज अ स्टॉक टू हाउ टू हेज योर पोजीशन या हाउ टू मेक इवन मनी. तब पूरी दुनिया पैसे गंवा रही है. सो सारे वीडियोस देख डाले कोविड में बैठ के, मैंने और मेरे पापा ने. वी यूज्ड टू मेक नोट्स टुगेदर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, एंड देन वी यूज्ड टू गो टू स्लीप. देयर वाज दिस ग्रेट रिसोर्स, इफ एनीबॉडी वांट्स टू चेक इट आउट, called as Varsity by Zerodha. Yeah. मैं पेपर ट्रेडिंग करता था, वो एक्चुअल ट्रेड करते थे, एंड वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एट द स्टार्ट, काफी ज्यादा. स्टार्टिंग में वी इन्वेस्टेड 10 lakhs, सारा गया वो भी. More and more and more. Starting के 3 साल 4 साल तो we lost a lot of money. So how much would you have lost in the first 3 years? Around 50, yeah. Around 50? Yeah, around 50. इतनी savings थी, but we lost a lot of money. After But that was like your learning process. Yeah. My dad says कि the only way to learn in stock markets is giving out money. You have to lose money in the stock markets. Otherwise your psychology won't set in the market कि market चलता कैसे है, sentiments कैसे होते हैं. Consider it as if you want to become a trader in stock market, then consider 50 lakhs as your college fees कि तुम 4 साल 5 साल की college fees दे रहे हो. Very expensive though. It's yeah expensive. MBA के साथ ले लो, but when you start earning, you earn a lot and you never see back. So alright, so moving to the next prodigy over here, Swayam. What do you think? Look at all his aspirations. He wants $250 million house. What do you think about that? You know, Arun ने जो भी बोला, I agree to a lot of things, but I disagree to some factors. Okay. मेरे लिए I like it. It's interesting. Yeah, like, क्यों? क्योंकि I don't think so कि हमेशा पैसे कमाने का motive is to buy big houses, McLarens, or having a Starbucks का coffee. I think that's too overrated. How old are you? I'm 18. Okay. Yeah. So let's start with my own journey. So I'm a crypto trader. Web 3.0 and a blockchain enthusiast. So मैंने 4 लाख रुपए से शुरू किया, वो भी उसकी स्टोरी बताता हूँ 4 लाख आए कहाँ से. So मुझे बर्थडे पे पैसे मिलते थे 40,000 सबसे रिलेटिव सबसे मिलके. तो 3 साल के स्पैन पे जब मैं 14 साल का हो गया तो मेरे पास 4 लाख रुपए मेरे बैंक में थे. तो अब मैं तो 14 साल का हूँ, आई कांट ट्रेड, आई कांट डू एनीथिंग. तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज मुझे इसमें जाने दो. एंड माई अंकल इज ऑलरेडी इनटू दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग. सो मामा ने मम्मी को बनाया, वो मान गई. तो मैंने मम्मी के नाम पे अकाउंट बनाया एंड आई स्टार्टेड विद क्रिप्टो ट्रेडिंग. तो आई स्टार्टेड 4 lakhs एंड 4 लाख का मैंने 1.15 CR बनाया. 1.15. 1 करोड़ 15 लाख in the span of 3 years. ठीक है. So that's like you start with 4 lakhs. 4 lakhs. That's almost like 30x. 30 years. In 3 years. 30x in 3 years. Yeah, 30x in 3 years. And जब 1.15 CR बन गया, मम्मी को तो पहले वो 4 लाख रुपए वापस कर दिए. उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया. तो स्कॉलरशिप में I got a grant of $100K. And like I got an opportunity to study at Harvard to do my eco majors.
But did you apply to Harvard? You got in. Yeah, I got it. मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक फाइनेंशियल स्टडी कर रहा हूँ या अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके पैसे मैं खुद दूँ, rather than my parents investing in me. हाँ. So अब हुआ क्या? अब मेरे पास मास्टर के लिए तो फीस जमा हो गई थी, बट अब वहाँ के लिए दोस्त यार मेरे पास थे ही नहीं. So I rejected Harvard. You got into Harvard. Harvard, you said no because you didn't have 2 crores. So you came here, Masters Union. Correct. But continue. Then what happened? तो why did I come to Masters Union? Why did I join this particular institute? क्योंकि और भी इंस्टीट्यूट है. मैं मास्टर्स यूनियन सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ऑफ द यूनिक करिकुलम. मैं कोई और इंस्टीट्यूट जाके आज आपसे नहीं मिल पाता. मैं कोई और इंस्टीट्यूट जाके CXO सेशंस इतने अच्छा अटेंड नहीं कर पाता बिकॉज लाइक अभी भी वी हैव डॉक्टर केविन स्मिथ. सो वो यूपेंस हैं एंड वी बी टॉकिंग टू हिम From Wharton Business School. Wharton Business School. आप जो बोलो. एंड उनसे बात करने के बाद जो हमें इंसाइटफुल सेशंस मिलेंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो हमें कोई और दे पाएगा. And that's why I chose a school, business school like Masters Union to spend my 4-year time too. So Raghav, so you tell me now what building you want to build. These guys are talking about some billion-dollar ideas. Let's learn a little bit about you. Well, इनकी बिल्डिंग तो काफी ज्यादा आई थिंक कॉमन लोगों से थोड़ा सा मेरे भी सर से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं बिकॉज मेरी बिल्डिंग बहुत सिंपल चीज से बनी है. दैट इज स्टॉक मार्केट. स्टॉक्स जो बेसिक स्टॉक्स लोग समझते हैं. ये लोग क्रिप्टो और ट्रेडिंग करते हैं. डेरिवेटिव ट्रेडिंग. व्हाट इज योर थिंग? तो मैं खुद भी नहीं करता हूँ क्रिप्टो एंड डेरिवेटिव्स. यस, आई एम लर्निंग फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ. बट Are you guys like friends or like what? यस, I also started in COVID era. I think COVID के टाइम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा. You guys are like what? 15 years old? 14, 15? 14. 10th standard. I was 14 when I started. एंड बोर्ड्स का टाइम था उस टाइम पे. तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो था पेरेंट्स से. स्टिल एक दिन मैंने एक फोटो देखी कि मोदी जी राकेश झुनझुनवाला जी से मिलने गए हैं एंड झुनझुनवाला जी बैठे हुए हैं एंड मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं. तो उस दिन मेरे दिमाग में आया ये कौन है जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर सर खड़े हैं और ये बैठे हुए हैं. एंड तब मैंने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है. वो एक फोटो ने एक्चुअली अगर बिग बुल मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन गए. एंड वहां से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी. What do your parents do? They are from business. Business. What business? So my dad is into manufacturing. We have factories in Delhi and in Haryana region. And my mom is a housewife. Okay. तो तब कई मुश्किल से जाके मैंने 2-3-4 लाख रुपए मांग लिए कि थोड़े से पैसे एक बार लगा के देखते हैं. एंड आई हैड कॉन्फिडेंस. एंड मुझे याद है कि 2020 में मार्केट गिरा था काफी ज्यादा. एंड कह लीजिए कि झुनझुनवाला जी ने तो मेरे को इंस्पायर किया और शायद मैं इन्वेस्टमेंट में घुस पाया बिकॉज ऑफ दैट टाटा मोटर्स का शेयर जो उस टाइम पे मैंने 80 रुपीज में खरीद लिया. एंड आज अगर आप टाटा मोटर्स की वैल्यू देखोगे कहीं 700 रुपीज पे स्टैंड करती है. तो विद इन एन ईयर वो 4 लाख रुपए कहीं जाके 20 लाख रुपए बन गए थे. How did you evaluate this investment? So at that time I started learning a lot. मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग ज्यादा जरूरी है अर्निंग से. How old were you that time? I was I think 14. And today how old are you? 18. Okay, continue. So दैट टाइम मैंने काफी चीजें एवेल्युएट करी कि आगे आने वाला सेक्टर क्या है, फ्यूचर क्या है. एंड अभी भी मैं यही कहता हूँ कि ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर, ये वो सेक्टर्स है जो आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, जो आगे जाएंगे. इंडिया इज टेकिंग अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर. How much time did you spend in terms of researching about the stock before putting in the money in Tata Motors? At that time it took me around 1 month. 1 month you were just studying I was just studying about the stock. about the stock. Okay. तो आई थिंक 65 रुपीज पे देखा था एंड एक महीने में तो वैसे ही थोड़ा सा ऊपर चला गया था स्टॉक. एंड फिर मैंने पहला बाय किया अपना एंड भगवान की दया है कि वो जैसा रिसर्च थी वैसा चला गया. फिर पेरेंट्स को फिर से कन्विंस किया कि अब हम पोर्टफोलियो थोड़ा और बढ़ा देते हैं. तो 4 लाख 20 लाख हो गए. 20 लाख हो गए. हाँ, उसके बाद you went back to your parents saying कि अब 20 लाख रुपए से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं पोर्टफोलियो को. एंड फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा और पोर्टफोलियो बढ़ाया. तो हमने 2 साल में उस पोर्टफोलियो को डबल कर लिया क्योंकि मार्केट ऑल टाइम बुल रन पे थी. तो 20 लाख 40 लाख हो गए. इस बार हमने और ज्यादा पैसा लगाया. सो आई थिंक 35 को 70 लाख कर लिया. ओके. नहीं, और कितना और पैसा डाल दिया आपने? 15 लाख और ऐड कर दिया. 20 तो हो ही गए थे. तो जो भी टैक्स था वो पे करा. उसके बाद उसको टोटल करके 35 लाख तक हम ले आए. एंड देन वो 2 साल में 70 लाख हो गया. ओके. पास्ट 8 months में आई अर्नड अबाउट 50 lakhs 55 lakhs on a portfolio of 1 crore. So that's a 55% return in the last 8 months itself. How is this possible? So exactly. Now यहाँ पर जो मैं 3 साल से काम कर रहा था वो अंडरस्टैंडिंग आई बिकॉज ईवी सेक्टर को आगे जाना था, सोलर सेक्टर को आगे जाना था, पावर सेक्टर को आगे जाना था.
कंपनीज का विजन दिखता था। राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी जिनको मैं हमेशा आइडियलाइज करता हूँ कि अगर आप बजट पढ़ना सीख गए, बजट जानना सीख गए, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। उनका एक क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी सुबह नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए थी और उस दिन बजट आया और मेरी नेटवर्थ उस दिन 12 करोड़ रुपए हो गई। तो बजट आया तो मुझे दिख रहा था कि गवर्नमेंट प्रोग्रेस कर रही है इन सब सेक्टर्स में, डिफेंस में प्रोग्रेस कर रही है गवर्नमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है, पावर। Studying the budget, whatever the finance minister comes out with every year, studying the budget gives you a very good idea about the macro story which is going on. Macro story, exactly. Macro is one of those analysis जो बहुत underrated है. If I may summarize, you're like, okay, the government is saying that EV should go ahead. So the macro vision is set. But it's not that all companies will grow at that same required rate, because you have studied all of these companies in that particular sector. So you know which company has the most potential and you'll place your bet on that. And that will give you the higher upside. Is that the right summary? Kind of. Then you have to do fundamental as well as I also do technical analysis like Aru did. So investment is always a long-term game, and investment is also a passive income kind of a thing. आप जैसे कि स्वयं ने कहा कि साइड इनकम की तरह आप चलाते रहो उसको, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग चीजें हैं। एंड आई बिलीव इन इन्वेस्टमेंट, कि आई बिलीव इन क्रिएटिंग वेल्थ। तो वो वेल्थ आपकी बनती है जब आप इन्वेस्ट करते हो। जैसा राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे कि कैपिटल बनाना हो तो ट्रेडिंग करो, और अगर वेल्थ बनानी हो तो इन्वेस्टमेंट करो उस कैपिटल। Why do you disagree with him? The wealth he's talking about, he's creating over the time. Hedge fund managers do that in 1 month. 1 month. Or a year also. Like less. You're saying like trading can be like a primary income. Yeah, it can be. So, but tell me this: can you do trading alongside a 9 to 5 job? Yeah, you can. You can be a full-time trader, I mean. So no, I would disagree with this fact, because ऐसा नहीं है कि देखिए सबके पापा के पास नहीं होते पैसे के देने के लिए। Oh my God, this is such an allegation, यार। मैं trading मैंने नहीं really, like मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले let's clear that one word जो मैंने अभी भी बोला, इसने भी बोला, ये भी बोलेगा, we are from well-to-do family, मतलब हमारे Everybody got support from your father in the beginning. Yeah, इतनी सेविंग्स थी कि अगर हमने चलो 4 लाख रुपए गवा दिए तो हमें 2 महीने तक ताने मिलेंगे, उसके बाद 2 महीने तक शायद थोड़ी और टॉन्ट्स मिलेंगे, उतने में खत्म हो जाएगा। So that is the worst case scenario in your. Yeah, so you need funds. Funds कैसे आएंगे अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही? You need to do some work. अब आप फ्रीलांसिंग करो, अब वो आप जाके जॉब लो, तो वहां से आपको एक मॉनेटरी अर्निंग आ रही है। आपने वहां से अपनी अर्निंग ली, उसमें से पहली बात तो आपने बस वहां से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डाला ट्रेडिंग में, जो कि यू आर विलिंग टू लूज। पहली बात ये, हर जगह डिस्क्लेमर ये होता है कि जो पैसा आप गंवाना चाहते हो, पहले म्यूचुअल फंड्स में हो, ट्रेडिंग में हो, क्रिप्टो में, कहीं भी हो, हमेशा एक रिस्क फैक्टर हर जगह होता है। So I'm sure all of you guys have some sort of entrepreneurial idea. So I'm going to ask each one of you, if I were to, let's say, give you 100 crores, what would you do? I'll start off with you. So I didn't tell you अभी तक, but I'm also working on a startup right now. Okay. And So 100 crores you'll put in your startup. well, I don't require that much अभी। So how much money do you need? So currently ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा नंबर है, बट ज़्यादा अभी तो नहीं। थोड़ा बहुत ऐप डेवलपमेंट, एंड आई थिंक करीब अगर मेरे को 80 lakhs to 1 crore rupees मिल जाए तो मैं ये सारा काम कर सकता हूँ at a starting stage. Have you approached Pratham? I am gonna approach him. I approached MU and they were very happy with the idea. तो उन्होंने मुझे कहा प्रोटोटाइप्स बनाओ वगैरह बनाओ, so we started working on that. अब रिसर्च पूरी लाओ, आपका जो 15 लाख का एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उसको आप प्रेजेंट करो वगैरह वगैरह। सो वी आर डूइंग दैट, वी आर टॉकिंग विद अदर इन्वेस्टर्स भी। तो हम लोग उस स्टेज में हैं और हम बड़ी जल्दी, आई थिंक 3-4 महीने के अंदर कहीं ना ये स्टार्ट कर देंगे। इन्वेस्टिंग वाज माय पैसिव इनकम, बट दिस स्टार्टअप इज माय वेल्थ क्रिएशन, दैट बिजनेस क्रिएशन दैट आई वांट टू गिव टू द कंट्री एंड अपने लिए भी जो मैं चीज करना चाहता हूँ। Got it. Okay, now you, 100 crores. So जैसे मुझे 100 crores मिलेंगे, उससे पहले 1 CR in crypto. 1 CR in crypto. 1 CR in crypto, and another CR to back that. This thing, safety net. Safety net. Okay. 52 CR in my startup. What is this startup? An exchange. Exchange मतलब एक crypto exchange. You're making your own crypto exchange. Kind of crypto exchange, but मेरे exchange पे आपको entertainment भी मिलेगा, मेरे आपको exchange पे education भी मिलेगा, and you will earn money too. Earning, education and entertainment. But उसमें बहुत कुछ अलग भी चीज़ है, so I can't tell. Like उसमें defied things भी included है, तो I can't frame this as a crypto exchange now. And जब बाकी जितने भी remaining amount होंगे,
that would be in charity. Charity. Charity, yeah. Okay. Cool. All right. You last. 100 crores. 100 crores, what would I do of it? Yeah. If you give me 100 crores. Okay, so 3 to 4% in bonds. जो भी I'll invest it, all of it. 3 to 4% in bonds. For safer, मतलब hedging करने के लिए एक तरीके से protect करने के लिए कि बाकी मेरी investments करे तो this will give me bonds or G6 or debentures, company debentures. 70 to 80% in public and private markets. So it could contain stock markets, stocks जो publicly listed है, and then I would do some privately listed companies also which are growing right now in private equities or in venture capital. And then whatever the left is, I'll use the derivatives to protect my funds using the hedging ratios कि ये इतना गिरेगा तो इतना I want. If my money grows, whatever profit is made, I'll put all that in the. You don't want to start any business or anything? No entrepreneurial spirit? I think so. Like, there's the king, but I'm the kingmaker. Okay. So I buy companies out or I sell companies out. So. All right, guys. Probably you guys are getting a lot of FOMO by listening to these guys, but always realize that they are the exception, not the norm. I thought their stories are very, very important to cover so that it might inspire people like you who are still trying to figure out what to do in life. All right, guys. Thank you so much for watching till the end, and I'll see you in the next one.